ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर टुडे। आज हम बात करने वाले हैं तीन Q2 फिस्कल ईयर 25 की कंपनीज़ के बारे में, जो कंपनीज़ ने अपने अपने Q2 फिस्कल ईयर 25 के रिजल्ट्स आज और कल में ही डिक्लेयर किए हैं। फर्स्ट इज एम्बर एंटरप्राइजेस, सेकेंड इज़ जोमेटो एंड थर्ड इज़ पेटीएम। तो इसके मैंने थोड़े से यहाँ पर नोट्स भी लेके रखे हैं, विच आई विल बी ट्राइंग टू डिस्कस as we try to understand that the things which are driving these companies forward, और क्यों इनके sort of results और इनका जो business model है और जो ये companies को achieve करना है in the time frame are so interesting and exciting to note of। तो पहले हम अगर बात करें एम्बर एंटरप्राइजेस की, तो इनके लाइक वन ऑफ द मोस्ट की highlights have been कि their revenue from operations have grown by 82% year on year and have grown approximately 10 to 11% from quarter on quarter। तो अभी के इनके जो revenue from operations आए हैं, those have approximately been 1685 crores, up from 927 crore from a year on year basis। और लास्ट क्वार्टर में इनके approximately 1500 का CR के इनके रेवेन्यूज़ थे, विच आर ऑफ कोर्स अगेन एक्सट्रीमली डिसेंट। अगर हम देखें तो इनके हाफ ईयरली फिस्कल ईयर 25 रेवेन्यू हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय अबाउट 55% और ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 4886 करोर्स। इनका इसी टाइम पे ये वाले ही Q2 फिस्कल ईयर 24 में द हाफ ईयरली revenues were approximately 2629 crores, which have also again seen a very good add up। The growth here is sort of primarily driven by extremely strong demand in the consumer durables division, especially जो इनका रूम एयर कंडीशनिंग का इनका जो एक डोमेन है, उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा इनको इस वाले क्वार्टर में मिली है, विच कैन अगेन बी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड ऑन द वेदर कंडीशंस एंड इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग जो इन्होंने की है। सेकेंड, हम अगर यहाँ पर देखें तो दे हैव ऑल्सो ट्राइड टू एज हायर इन टू प्रॉफिटेबिलिटी। इबिटा इनका 132 करोड़ से पे अभी है, विच हैज़ अगेन सीन ऑलमोस्ट 82% इंक्रीज सॉर्ट ऑफ ईयर ओवर ईयर। और क्यू ऑन क्यू पे भी इनको एक अच्छा सा मूव देखने के लिए मिला है। फाइनली देयर पैट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट important sort of metrics for us to understand, has been approximately 21 crores from a loss of 6 crores in the last quarter, from a loss of 10 crores in the Q1 of fiscal year 25। तो अगर हम यहाँ पर देखें, and also on the screen that you guys are seeing sort of currently, हमने एक टर्न अराउंड टाइप का क्वार्टर ये कंपनी में इस टाइम पे देखने को हमें मिला है। सो दीज आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक टर्न अराउंड जब भी कोई भी कंपनी का होता है, सो वाई दैट स्टॉक प्राइस एंड वाई दैट चार्ट स्ट्रक्चर इज सॉर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सेकेंडली, हम यहाँ पर देखें तो इनके दो तीन टाइप के इनके डिविजन्स है। फर्स्ट इज सॉर्ट ऑफ इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का एक इनका डिवीजन है, जहाँ पे इनके पास अभी 24 फैसिलिटीज़ है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव सीन हियर इज कि एक जेवी भी इन्होंने फॉर्म की है बाय द नेम ऑफ एम्बर रेसोजेट, स्पेशली फॉर वॉशिंग मशीन्स। तो ये सॉर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स के सेक्टर में से अभी जो एक पुश हमें देखने को मिल रहा है, नॉट ओनली इन ऑल दीज कंपनीज बट इन ऑल्सो द कंपनीज विच आर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, जैसे कि वोल्टास है, ब्लू स्टार है, और भी एक दो कंपनीज है मैं जिनको ट्रैक कर रहा था, जिनका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। तो ये एक स्पेसिफिक जो एक सेक्टर है दैट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन द पास्ट 1 year, और अभी भी ये सेक्टर में हमें टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं।
इनका अभी एक अगर हम एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे, सो दिस इज़ अ गुड चार्ट दैट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि कैसे FY20 से FY25 अप्रॉक्सीमेटली 5 years में इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड. और इनके इस टाइम पर on the left hand side we can see all of the products that they currently have. Plus on the right hand side we can also see that target segments, जो एक type of segments है जिनको अभी ये target कर रहे हैं especially for targeting their growth. One of the most key operational metrics जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं especially in the consumer durable section is that the division saw approximately 95% year-on-year revenue growth with RAC contributing to approximately more than 100% increase, or non-RAC components have also grown by approximately 68%. The division introduced new products such as tower ACs and tropical high efficiency split ACs. तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो एक sort of turnaround हमें देखने को मिल रहा है where the company is trying to focus more on trying to come out with good and new products. इनका एक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इन लोगों का डिवीजन है, दोज ऑल्सो सॉ अ revenue growth of approximately 98% on a year-on-year basis to approximately now contributing 500 crores. तो इन लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का जो रेवेन्यू है दैट इज ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यूज, विच इज ऑफ कोर्स अगेन समथिंग टू टेक नोट ऑफ. Or the division sort of like benefited from the imposition of anti-dumping duties भी इस पे लगाई गई है on sort of like PCBs जो चाइना से import होता है उसके ऊपर भी anti-dumping duties दिखाई दी है, securing new orders in defense and auto segments also. One more thing to note here is JV भी इनका हुआ है with the Korea circuit for trying to expansion into HDI, flex and semiconductor substrates for PCBs. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो the company is really sort of एक पूरा एक general type का एक अगर हम एक टाइप का एक एनालिसिस बनाने को देखें तो the company is really trying to focus on expanding its current footprint. हम देख सकते हैं कि केपेक्स साइकिल से आगे भी ये कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है ऑन हाउ दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर करंट कैपेसिटीज एंड बिल्ड मोर स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग technology hubs in India itself. Or of course the company is also staying extremely vigilant with the government's Atmanirbhar Bharat vision. तो ये भी एक sort of like चीज़ें हैं which sort of add to the baseline. और जो इन लोगों का JV हुआ है अभी, जो एक जॉइंट वेंचर हुआ है बिटवीन एम्बर ग्रुप एंड साउथ कोरिया सर्किट, वो भी सॉर्ट ऑफ अगेन इम्पोज करेगा टू देम टू फर्दर स्ट्रेंथन देयर ऑफरिंग्स इनटू द EMS डिवीजन, जो बहुत ज़्यादा अपस्विंग में इस टाइम पर करंटली चल रहा है. एंड दिस विल ऑल्सो sort of like help them to move more into product expansions such as trying to manufacture HDI, flex and semiconductor substrates also. तो इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का एक पोर्टफोलियो एक्सपेंशन देखें, दिस अगेन हैज़ ऑलमोस्ट ग्रोन बाय 6-7 times. फिस्कल ईयर 20 में दे वर ओनली ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर एयर कंडीशनर्स or consumer durables, but now they have completely risen to also get into automobiles, smartwatches, IT, telecom, energy, defense, aerospace. It means कि ये एक स्मॉल बेस की कंपनी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच हैज़ एन एक्सट्रीमली गुड एंड एक्सट्रीमली ऑसम ग्रोथ पोटेंशियल इन माई ओपिनियन. अगर हम इनका थर्ड टाइप का जो एक इनका वेरिएंट है या एक इनका थर्ड टाइप का जो एक इनका डिवीजन है विच इज़ रेलवे एंड सब सिस्टम्स एंड मोबिलिटी डिवीजन, दैट ऑल्सो सॉ बट इसमें सॉर्ट ऑफ लाइक the revenue sort of declined by about 6% year on year to 124 crore, and ये sort of हुआ because of delays in the Mumbai Metro and Vande Bharat Express projects. However, the order book sort of continues to remain strong with no cancellations, and the company expects a recovery with product trials under the Eugene JV by fiscal year 26. One good thing about the company right now is that they are trying to be open about their shortcomings. जो बहुत सारे companies hide करने का try करती है.
यहाँ पर हमें इनका जो एक फिस्कल ईयर 25 Q2 का जो एक इनका रिजल्ट था उनसे हमें ये भी देखने को मिला दैट द कंपनी इज ट्राइंग टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन ट्राइंग टू एक्सपैंड बियॉन्ड होराइजन्स. बहुत सारे जेवीज भी देखने को मिल रहे हैं वेयर दे आर जस्ट ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली बूस्ट their sort of like manufacturing capabilities. अगर हम यहाँ पर भी देखें, so they have tried to diversify their railway and subsystems का portfolio also, where to start with initially they were just at HVAC for railway and metro and buses, but abhi jump straight to fiscal year 25. They have been able to grow their entire thing from 4% to almost 18%, which again is an extremely positive thing. पूरे ही रिजल्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है that once they continue or start to getting it right, the revenues from here can grow, can sort of try to grow multifold. एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ये भी चीज़ जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि द ग्रॉस मार्जिन्स हैव सॉर्ट ऑफ कम डाउन फॉर द ईयर ऑन ईयर, विच इज़ like essentially trying to actually reflect on higher raw material costs. However, operational efficiencies have helped offset some of these costs. एक और चीज़ जो यहाँ पर ऑफ सिग्निफिकेंस है कि द कंपनी हैज़ बीन स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग इट्स केपेक्स विथ इन्वेस्टमेंट्स फोकस्ड ऑन न्यू पीसीबी प्लांट्स एंड ग्रीनफील्ड एक्सपेंशंस इन द रेलवे सब सिस्टम्स बिजनेसेस, जो भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का इनका कॉम्पोनेंट है अभी के लिए. इफ़ यू ट्राई टू टॉक अबाउट नेट डेट, then the company's debt is also up from 15 crore in the previous quarter to approximately 2000 crore. But this again is understandable when the company is trying to be on war footing as far as their growth prospects are concerned. तो अभी के लिए इनका जो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक इनका प्रॉफिटेबल और इनका Y-on-Y ग्रोथ भी इसमें अच्छा रहा है विथ हाई सिग्निफिकेंट investments in high margin component spaces like bare PCBs and semiconductors through its JV with the Korea circuit. These are also some important points to note of. The Ascent circuit expansion and Hauser PCB plant are sort of key growth levers, enhancing Amber's domestic capabilities and supporting of course the Atmanirbhar Bharat का जो एक पूरा एक कंप्लीट हमें देखने को मिल रहा है. और like on the front of the management, we have also sort of like tried to actually understand कि the delays in the railway subsystems जो एक इनका weak point रहा है for this particular quarter were described as temporary with no order cancellations as such. तो delay हुआ है, orders में cancellation नहीं देखने को मिला है. The management continues to remain extremely optimistic about the future growth in the division, particularly with the Sidwal फैसिलिटी कमिंग ऑनलाइन बाय Q1 फिस्कल ईयर 26. तो अभी से 2 या 3 क्वार्टर्स के बाद हम देख सकते हैं कि इनका ये भी एक जो लैगिंग टाइप का इन लोगों के क्वार्टर में था, दैट विल ऑल्सो ट्राई टू बूस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट्स एंड टू द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी. सो अकॉर्डिंग टू मी गुड रिजल्ट्स, like a company जिनको ट्रैक में रखना चाहिए, especially on how the entire manufacturing domain is working out in India currently. तो ये आज की हमारी फर्स्ट कंपनी थी. जो सेकंड कंपनी आज हम देखने वाले हैं वो है नन अदर देन Zomato. The stock has been a darling for investors, no doubt about that. तो sort of इसको भी हम देखने को ट्राई यहाँ पर भी करेंगे और sort of like एक टाइप का एनालिसिस फॉर्म करने का ट्राई भी यहाँ पर ना फिर करेंगे कि what has the business done currently. So this is my first time that I'm essentially trying to go through the entire results of Zomato. मैंने इतना ज़्यादा डीप डाइव नहीं किया है, बट बिकॉज आई बिकेम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इन द लास्ट क्वार्टर, तो सॉर्ट ऑफ like it's important for me to now understand कि sort of कैसे ये चल रहा है अभी के लिए. सो अगर हम Zomato की बात करें यहाँ पर, सो दे हैव sort of actually tried to segment their businesses into 4 most important quarterly revenue generating streams, which is of course their main business of like Zomato, where you
order online. Then there's Blinkit, which is like a quick commerce. फिर है District, which is their going out. अभी पेटीएम के टिकटिंग बिजनेस का भी इन्होंने सॉर्ट ऑफ एक टाइप का एक्विजिशन करने का ट्राई किया है. सो दैट विल ऑल्सो बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग टू सी कि व्हेन दैट ऑल्सो स्टार्ट्स टू कंट्रीब्यूट sort of like positively to their like numbers on a Q-on-Q basis, yeah, to on a year-on-year basis. And Hyperpure, which is their B2B solutions, when a sort of like a restaurant, अगर कोई अपना एक टाइप का restaurant chain run कर रहा है, and if they want to search for food ingredients या food raw materials, so how are they sort of trying to plan to enter and buy through the app and platform of Zomato. तो अगर हम यहाँ पर इनके रिजल्ट्स को देखें, सो ऑफकोर्स द रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस हैव बीन टेरिफिक. 5,000 करोड़ का नेट रेवेन्यू ये वाले क्वार्टर में टच हुआ है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 58% राइज ईयर ऑन ईयर. एंड Q-on-Q पे भी एक 13% का राइज हमें देखने को मिला है, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड. 5,000 करोड़ जनरली एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा एक milestone होता है, which Zomato has sort of managed to cross for this particular quarter. Extremely strong. The strong revenue growth is primarily sort of being driven by significant GOV growth across the food delivery, quick commerce, going out segments, which has again been extremely strong and terrific. Profitability, for their adjusted EBITDA, we have again seen like a growth of approximately 330 crores on a year-on-year basis. And on a sort of like a Q&Q basis also, it has had a 42 crore increase, which is approximately a 10% increase. इनके प्रॉफिट्स के बारे में हम बात करें तो दे ऑफकोर्स द कंपनी हैज़ जस्ट जम्प्ड इनटू प्रॉफिट्स. सो देयर प्रॉफिट after tax for last quarter was 2.53 crores. For this quarter has come out to be 1.76 crores. Profits में थोड़ा dip देखने को मिला है, but it is of course but natural because the company has had a couple of turnaround quarters और stock ने बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर ना फिर positively impact किया है. तो generally अगर company के results are not according to expectations, अब अगर हम deep dive करें then of course it is sort of understandable that the results are good, but because the market has run up so much, because the Zomato stock itself has run up so much, abhi market just wants to have a Q-on-Q increase also. All of the positives, all of the good things have now been priced in. Abhi the company and abhi the stock market wants to see doubling of प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर. तो अगर एक क्वार्टर में 2.5-3 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर दे जस्ट वांट टू डेवलप दोज बाय 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़. बट ऑफकोर्स इतना क्विक नहीं होता, एंड स्टॉक मूवमेंट्स एज वेल एज प्राइस अर्निंग्स आर नॉट लीनियर. सो वो भी एक चीज़ है जिसको ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी अगेन रिमेन्स एट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करोड़. Sort of extremely expensive for me at this point of time, but again the things that these guys have to offer, and because they have reached that 5,000 crore revenue landmark, this stock continues to be in my portfolio. फिर अगर हम इनके बिजनेस सेगमेंट्स पर भी जाएंगे, दे हैव 3 to 4 वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस सेगमेंट्स. इनका जो इस टाइम का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे स्क्रीन पे, सॉर्ट ऑफ एक्साइटिंग फॉर मी टू ऑल्सो नो कि सॉर्ट ऑफ इस टाइम इन्होंने Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्मेट में यहाँ पर देखने का ट्राई किया है. सो वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच कॉट माई अटेंशन वॉज the second question, which is that in Blinkit the store count has almost doubled in the past 1 year. How is the performance of the new stores valued versus the old ones? तो ये भी एक sort of important है, where the new stores are now reaching, and this is again a very important point note, is now reaching INR 7 lakh of GOV per day. 7 lakh of GOV per day gross order value is amazing, just to be able to point that out. So ये एक बहुत interesting sort of investor presentation है, which should be read by almost everybody. तो अब हम जाते हैं सीधा इनके नंबर्स पर, बिकॉज दोज आर
our source of attention. So for quick commerce Blinkit, they have added approximately 152 net new stores and 7 warehouses in Q2 fiscal year 25, with new stores contributing to approximately 7 lakh of GOV per day post launch. Food delivery has delivered a steady 20% year on year GOV growth with stable margins. The going out segment, this is going to be one interesting thing to note, wherein the new district app will launch soon, migrating the users from Zomato and Paytm platforms. तो वो दोनों प्लेटफॉर्म से भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूजर्स आर गोइंग टू माइग्रेट क्विकली. अगर हम इनके कैश फ्लो एंड बैलेंसेस के ऊपर अगर हम एक यहाँ पर अगर हम एक नज़र डालें, तो उसके पहले हम इनका क्विक कॉमर्स का भी एक नंबर्स को वैलिडेट करने को देखते हैं, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डोमेन्स फॉर जोमेटो. तो क्विक कॉमर्स विच इज़ एट्रीब्यूटेड बाय ब्लिंकिट, तो GOV भी इनका अप्रॉक्सीमेटली 2760 करोड़ से होकर 6000 करोड़ के नेट रन रेट पर दिख रहा है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 122% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर. Blinkit continues to deliver triple digit growth on a year on year basis, which is terrific in my opinion. Revenues have also almost doubled now. Q2 fiscal year 24 में 500 करोड़ के revenues होते थे. Now they have doubled to 1000 crore plus of revenues, which is again fantastic to say the least. Operating metrics में भी हम देखें तो orders, 92.9 million orders were received by Blinkit alone, which again for me is mind blowing. तो अगर हम इनके सारे ही metrics देखें, so their revenues and their GOVs have all almost been growing on a triple digit year on year basis, and that's why the stock is being impacted, is being positively impacted because of it. B2Bs में भी हमने देखा देर हाइपर प्योर अगेन ट्रिपल डिजिट, ऑलमोस्ट ट्रिपल डिजिट. तो अब यहाँ पर स्टॉक के हिसाब से मुझे ये ही चीज़ लग रही है कि द स्टॉक कैन गेट इम्पैक्टेड बिकॉज द प्रॉफिट्स हैव डिक्लाइंड, एंड नाउ बिकॉज द कंपनी हैज सीन अ टर्न अराउंड, आई थिंक वॉट इज एसेंशली हैपनिंग इज दैट they want to sort of try to fixate it at seeing कि भाई अब हमें profits दिखाओ, अब हमें profits देखने हैं कंपनी में, and that's what the market will be demanding according to me. Lastly, talking some bit about the business strategy of like what I could understand is that Zomato sort of focused more on trying to diversify its other type of businesses with the introduction of the district app for its going out segment, which is expected to drive future growth. In addition, Soundbox ads, which will now become an important part of their revenues thanks to its acquisition of Paytm, and other merchant reactivation programs are a part of the strategy to sort of be able to enhance engagement with users and merchants. तो पेटीएम का भी एक जो इनका एक्विजिशन हुआ है, विच हैज़ ऑफकोर्स बीन एक्सपेंसिव, इज सॉर्ट ऑफ नाउ बीइंग यूज्ड टू बॉल्स्टर देयर एंटरटेनमेंट एंड गोइंग आउट बिजनेस, बिकॉज इनको अभी टिकटिंग बिजनेस और यहाँ सब पे भी ना फिर जाने का, एंड दे वांट टू सॉर्ट ट्राइंग टू कैप्चर द एंटायर एंटरटेनमेंट जोन. सिट आउट, घर पे बैठो, you have to directly or indirectly pay to Zomato is sort of what the company is trying to now do. One thing which is sort of interesting to see कि कंपनी ने अभी एक अपना QIP भी लॉन्च किया है of 8,500 crores. In my opinion, not the best time to go for these, because it only sort of tries to signify that the company is trying to cash in on the bull market growth, but then again the company has positive growth of venues, so I definitely feel that they are sort of trying to uptick that and sort of take full advantage of gaining those crores and trying to bolster their businesses. अब फ्यूचर ग्रोथ की पोटेंशियल की बात हो अगर, तो ऑफकोर्स जोमेटो इज पॉइज्ड फॉर like quick further growth, especially with Blinkit. Blinkit still continues to grow on triple digit, which according to me is extremely positive. डिस्ट्रिक्ट ऐप भी आने वाला है, पेटीएम के बिजनेस को भी इंटीग्रेट करने वाले हैं, हाइपर प्योर इज ऑल्सो ग्रोइंग एट गुड रेट्स. सो इन माई ओपिनियन नाउ विद द फेस्टिव सीजन ट्राइंग टू पिकअप, अभी दिवाली
दिवाली है, क्रिसमस है, अभी सारे लाइक फेस्टिवल्स इन द Q3 के हमें रिजल्ट्स में ये सारे फेस्टिवल्स के नंबर्स भी देखने के लिए मिलेंगे. विल सॉर्ट ऑफ बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये वाले नंबर्स का कैसे इम्पैक्ट होता है एंड हाउ ब्लिंकिट sort of again tries to push that envelope in terms of revenue, or sort of abhi market will sort of try to expect more increased profitability कि अगर तुम 5,000 6,000 crore का revenues कर रहे हो, you have to at least reach that level of like profitability. तो ये थे हमारे Zomato और Amber इंडस्ट्रीज के ऊपर फिस्कल Q2 FY25 के बिजनेस एनालिसिस. मैंने सारे सॉर्ट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस को कवर करने का ट्राई किया है. इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. और भी ऐसे वीडियोस आने वाले हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.